तार अर्थ सभार समाप्ति थिला। वहां पास्टर ने प्रार्थना किया था, और से जगह रे परमेश्वर दास प्रार्थना करथिले। सभी लोगों ने मिलकर गाना गाया था, पुणे समस्त मिसिक्री गीत मध्य गाइथिले। पास्टर ने प्रचार किया था। पुणे से जगह रे पालक महाशय मध्य प्रचार मध्य करथिले। 1.5-2 घंटा वो मीटिंग चला, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। प्राय 1.5 घंटा 2 घंटा पर्यंत से सभा चलीथिला, किंतु आगे को किछि भी जना पड़िला नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे ये दर्शन दिखा रहा था। कारण परमेश्वर तांकु से दर्शन देखौथिले। जब मीटिंग खत्म हुआ, मैंने पापा और मेरे पास्टर जो सामने बैठे थे उनको ये शेयर किया। और से सभार समाप्त परे तांकर पितांको आसे बालक महाशय को ए समस्त विषय को से कहिले, और वो दोनों बहुत खुश हो गए। और एई कथा सुनिला पर से माने बहुत खुशी हेले। मेरे पापा तो बहुत ही खुश, और आज्ञाकर बापा तो बहुत आनंद हेले, क्योंकि बड़ा बेटा तो सेवा के लिए नहीं निकला, वो इंजीनियर बनने के लिए निकल गया। कारण प्रथम जात शिशु तो से परमेश्वर के सेवा करला, किंतु इंजीनियर बनिया पाए से गला। तो प्रभु अब दूसरा बेटे को छू रहा है, इसीलिए पापा बहुत खुश। वर्तमान परमेश्वर से द्वितीय पुत्र को छूचंती, सेतिमे तांकर पिता बहुत खुशी होतिले। हम सब मीटिंग के बाद घर पहुंच गए, और सभा पर समस्त तांकर निजर घर को फरी गले, खाना खा के सो गए। और खाइला पर से माने सोइले। और आपको मालूम है, सभी सो गए और मैं भी अद्र निद्रा में था। इसका मतलब आई वाज इन हाफ स्लीप। और समस्त सोई गले, किंतु आज्ञा सेडा चेई सुइछंती। ठीक है, और अचानक शैतान मेरे पास आता है, और हठात शैतान तांको पाकर आसिले, और आके कहता है, आज मीटिंग में जो भी तूने देखा वो मैंने दिखाया। और शैतान कहला, आजि जो सभा रे जो दर्शन गुडा को देखिलु सेटा मु देखैनी बोली शैतान को होची। मैं कहा नहीं हो सकता। और आज्ञा कहले एटा केबे भी ही पारिबो नहीं। मैं अपने बेड से उतर के नीचे उतरा, और परमेश्वर कर दास से खंडर उठी की तळु को आसिले। मैं घुटने में आ गया, और अंठुरे बसिबा आरंभ कले। मैंने कहा, परमेश्वर अगला 3 दिन मैं खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। और से कहले, परमेश्वर आगामी 3 दिन पर्यंत ना मु कोनसी खाद्य भोजन करिबी ना पान करिबी। मैंने कहा कि मैं उपवास और प्रार्थना में तेरे चरणों में बैठूंगा। उपवास और प्रार्थना सहित मु तुमरो चरण तले बसिबी। मुझे तेरी ओर से कंफर्मेशन चाहिए। प्रभु जदि एटा तुम ठारो अछि कि नहीं, एही सिटक एही निश्चित हेबा पय मते दरकार अटे। तूने मुझे सेवा के लिए चुना, तूने दर्शन दिखाया है या नहीं? और तुमे मते दर्शन देखेलो ना तुमे मते सेवा पय डाकिलो कि नहीं, एही विषय को मु जानिबार अछि। 3 दिन उपवास और प्रार्थना में प्रभु ने ब्लेस किया। और 3 दिन उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर मते आशीर्वाद कले। तीसरा दिन उपवास खत्म होने से पहले परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। और तृतीय दिन रो समाप्त पूर्व परमेश्वर गोटे वाक्य देले, और वो वचन था यूहन्ना 15:16। और सेही वाक्य थिला यूहन्ना पुस्तक 15 पर्व 16 पद। और उस समय मुझे ये वचन मालूम नहीं था, और सेही समय सेही वाक्य रो अर्थ कोन मते जणा नथिला। लेकिन जब मैंने खोला और पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा था, किंतु जतबे बसना खोलिली और पढ़िली, उसमें ऐसा लिखा था, you did not choose me, but I did chose you and appointed you to go and bring forth fruit. और सेटारे प्रकार लिखल अछि, तुमे माने मते मनोनीत करि न हो, किंतु मु तुमको मनोनीत करि अछि। और तुमे माने जे परि जाय फल उत्पन्न करो, वो तुमानकर फल स्थायी हुए, एथि पय मु तुमको मनोनीत करि अछि। तूने मुझे नहीं चुना। तुमे मते मनोनीत करि न हो। मैं समझ गया, मैंने उसको नहीं चुना। तापर मु बुझि गली, प्रभु को मुझे माने बाची नहीं मनोनीत करी नहीं। मैं समझ गया, उस प्रभु ने मुझे चुना। और मु बुझि गली कि सही परमेश्वर मते बाची अछंती। मेरे प्रियो, उस दिन मैंने पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और सही दिन मु संपूर्ण भाव निज को परमेश्वर को समर्पण कर देली। इस मार्च 28 को मैंने 26 साल फुल टाइम सेवा पूरा कर लिया। और मार्च 28 ए वर्षर मार्च 28 रे मु 26 वर्षर बयस बा 26 वर्षर सेवा कार्य को पूर्णता कली। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। सही परमेश्वर विश्वास योग्य अटंती। उसने कभी हाथ नहीं छोड़ा। से कभी भी हाथ छाड़ती नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते? अगर वो परमेश्वर मुझे चुन सकता है तो आपको भी चुन सकता है। और सही परमेश्वर यदि आज्ञा को बाचिचंती ताले आपण मान को मते से मनोनीत करते। अगर मुझे दर्शन दे सकता है तो आपको भी दर्शन दे सकता है। यदि आज्ञा को दर्शन देउचंती ताले आपण मान को मते देई पारिबे। अगर मुझे सेवा के लिए चुन सकता है तो आपको भी चुन सकता है। यदि आज्ञा को सेवा कार्य में आह्वान करचंती तो आपण मान को मते
सेवा कार्य ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରନ୍ତି। अगर वो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर सकता है तो आपसे कर सकता है। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆଜ୍ଞାକୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे जवान लोग बैठे हुए ଆଉ हैं। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ଅଛନ୍ତି। बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए ଆଉ हैं। ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वो आपसे बातचीत करेगा। ଆପଣ ନିଜ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। उचित समय पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। इस 26 साल में परमेश्वर की सेवा करते 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 दुनिया भारत के कोने कोने में जाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। ଏଇ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। भारत के बाहर करीब 15 देशों में परमेश्वर सेवा करने के लिए लेके गया। ଭାରତର ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି। मैं घूमने के लिए नहीं गया, मेरा परमेश्वर ने वचन बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए लेके गया। ମୁଁ କୌଣସି ଭାବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, वो हमारे लिए ऐसा करता है जो किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, जो किसी के मन में ख्याल भी ना आया हो। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଇନଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରନ୍ତି। भारत के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करने और कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु ने मदद किया। ଆଉ ଭାରତର କଣେ କଣେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। हजारों बच्चों को बाइबल कॉलेज में पढ़ाकर तैयार करके सेवा के लिए भेज दिया। ହଜାରେ ହଜାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପଢେଇକିରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। मेरे प्रियो, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠେଇଲେ। परमेश्वर ने, क्योंकि सेवा में आया तो परमेश्वर ने PTH, MDiv, MTH, PhD तक करने के लिए प्रभु ने मदद ଆଉ किया। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, BTS, MD, MTS ପୁଣି PhD ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। मेरे प्रियो, ये डिग्रियां कुछ भी नहीं है, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ କିଛି ବି ନାହିଁ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस परमेश्वर ने बुलाया है उसका बुलावा सबसे महत्वपूर्ण है। ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମନୋନୀତ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। आज दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के बीच में बैठकर उनको वचन सिखाने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାରୁ ବଡ଼, ମହାନ ଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। और गांव-गांव में या जंगलों में भी जाकर सेवा करने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है। ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। उसका कारण ये है कि जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ମୋତେ ମନୋନୀତ କଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। वो हमें ताकत देता ସେ है, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, वो हमें अनुग्रह देता ସେ है, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି, वो हमें बल देता ସେ है। ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज सुबह मैं दुर्गा प्रसाद में प्रचार कर रहा था। ଆଜି ସକାଳେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। बहुत ही अच्छा लगा मेरे प्रियो कि चारों ओर पहाड़ है, उसके बीच में गांव है, वहां पर परमेश्वर लेके गया प्रचार करने के ଆଉ लिए। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ରୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। पिछले 2 दिन फुलबानी इलाके में था, ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲେ। और उससे पहले 3 दिन हैदराबाद में पास्टर्स और लीडर्स कॉन्फ्रेंस किया। ଆଉ ତାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଷ୍ଟର୍ସ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। पिछले हफ्ते हम अपने यूथ जवानों को लेकर गोवा में गए थे मीटिंग के लिए। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ସେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଆରେ ନେଇକିରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। मेरे प्रियो, एक दिन भी खाली नहीं, परमेश्वर इस रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବେକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में सच्चाई लिखा है, खेत पक चुका है, फसल के लिए, है ना, कटनी के लिए फसल तैयार है, लेकिन मजदूर थोड़े ही है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରେ କି କ୍ଷେତରେ ଯୋଉ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ ବା ଫସଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପାଚି ଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो बहुत तेरे सेवकों की
जरूरत है, ଅନେକ ଅନେକ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, वो तेरे मजदूरों की जरूरत है। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। फसल तैयार है, ସେଇ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଅଛି, कटनी के लिए लोग तैयार हैं, କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। बस मजदूर चाहिए जो जाकर सुसमाचार सुनाए। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब जब प्रभु ने मुझे बुलाया, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଡାକିଲେ, मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे परिवार के एक एक जन सभी विश्वासी हैं, सभी कलीसिया के अच्छे मजबूत खंभे हैं, लेकिन मेरे परिवार के एक एक को सेवा के लिए फुल टाइम में निकाल। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। मैं जब सेवा में निकला, सभी मुझसे कहते थे, सैम तू सेवा में ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। मैंने कहा क्यों? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? तो वो कहते थे सभी तेरे घर में पढ़े लिखे हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो धीरे धीरे तुझे भी नौकरी में है ना खींच लेंगे। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କାରଣ ତମ ଘରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରାଇବେ। लेकिन आज रात्रि में बताना चाहता हूँ किसने किसको खींचा। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ କାହାକୁ ଟାଣିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मेरे परिवार के सभी लोगों को भाषा मालूम है, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜଣା ଅଛି। उत्तर भारत का सारा राज्य सब कुछ मालूम है। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। प्रभु हमारे परिवार के सभी को सेवा के लिए तो चुन ले। ପ୍ରଭୁ जी ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କର। ये कठिन कार्य था, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଠିନ ବିଷୟ ଥିଲା। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल लगातार मैंने प्रार्थना किया। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। मेरे बड़े भाई सीमेंस मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर थे। ଆଉ ସେ ସିମେନ୍ସ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ। बहुत ही उच्च स्थान में वो थे, अच्छा कमाते थे। ଆଉ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲା, ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। 98 में परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उनको भी छुआ। 1998 परमेश्वर प्रार्थना द्वारा तांको मन्नित कले। उन्होंने नौकरी रिजाइन किया और परमेश्वर की सेवा में निकल गए। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଚାକିରି କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। और तब से लेकर दिल्ली में रहकर वो परमेश्वर की सेवा परिवार समेत कर ଆଉ रहे ସେଇ हैं। ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। उसके बाद मेरी छोटी बहन कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने लगी। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭଉଣୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। परमेश्वर ने कहा नौकरी बंद कर, सेवा के लिए निकल जा। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେଇ ଚାକିରି ବନ୍ଦ କର, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଅ। और तब से परिवार समेत वो मिलकर सेवा कर रहे हैं। ଆଉ ସେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପରିବାର ସହିତ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2004 में लेफ्टिनेंट कर्नल होकर मेरे पापा रिटायर्ड हुए। ଆଉ 2004 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ। हमने पूछा पापा अब कहाँ, क्योंकि मालूम था कंपनी मैनेजर है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पदवी में उनको प्राइवेट वाले बुला रहे थे। ଆଉ ଯେମାନେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଚାକିରି ପାଇଁ। हमने कहा कि पापा रिटायर्ड हो रहे, अब क्या करने जा रहे हो? ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ବାପା ଆପଣ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବେ? उन्होंने कहा दिल्ली में मैंने ऐसा इलाका ढूंढ लिया जहाँ कोई कलीसिया नहीं है, मैं वहाँ चर्च प्लांटिंग के लिए जा रहा हूँ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। मेरे पापा मम्मी दिल्ली में रहकर बड़े भाई के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରହି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। अब रह गया मेरा छोटा भाई। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ। और छोटा भाई हमारे आजकल के जवानों जैसा वो कहता था तुम सब सेवा करो, मुझे मत छुओ, मैं नौकरी करूंगा। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଯେ ପ୍ରକାର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ମାନେ ସେବା କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ। और वो पहले लंदन में था, उसके बाद दुबई में नौकरी करने लगा। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 5 स्टार होटल का असिस्टेंट मैनेजर बन गया। 5 स्टार ହୋଟେଲର ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक हमारे परिवार से एक बाकी है, उसे भी सेवा के लिए निकाल। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲଗାତାର କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି ଦିଅ। 8 साल
पहले परमेश्वर ने उसको छुआ, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ उसने जॉब रिजाइन किया ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ସେ ଚାକିରିକୁ ସେ ରିଜାଇନ୍ କଲେ और उसी देश में दुबई से 100 किलोमीटर दूर उसने एक नए जगह पे हिंदी उर्दू आराधना प्रारंभ किया। ଆଉ ସେଇ ଦୁବାଇ ଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। मेरे प्रियो, हम हर साल उधर पढ़ाने के लिए जाते हैं ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ଯାଇକି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। और आपको मालूम है आज उसकी कलीसिया में 80 से ज्यादा लोग आराधना करते हैं। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ 80 ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। उसमें से 60 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी हैं ଆଉ 60 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି और करीब 10 से ज्यादा नेपाली हैं ଆଉ 10 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ନେପାଳ ଅଟନ୍ତି और बाकी भारतीय हैं। ବାକି ତାପରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो मेरे परिवार का कोई मुझे वहां पर खींच नहीं पाया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उन सबको इस महिमा में सेवकाई में चुन लिया। आमेन। ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଚାକିରି ପାଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। इतना महान है हमारा परमेश्वर। ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ମହାନ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे कोई छू नहीं सकता, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, वो परमेश्वर हमारे मध्य में मौजूद है। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। आज रात्रि भी आपको छू सकता है, ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। इसीलिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। वो उचित समय पर आपको ऊंचा ଆଉ उठाएगा। ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। परमेश्वर ने एक सच्चाई हमें समझा दिया ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ कि इस दुनिया के किसी भी नौकरी से बढ़कर ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ और डॉक्टर की नौकरी से बढ़कर, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଢିକିରି, आर्मी ऑफिसर के नौकरी से ଆର୍ମି बढ़कर, ଅଫିସର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଢିକିରି, है ना, इंजीनियर की नौकरी से बढ़कर, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଢିକି ये परमेश्वर की सेवा दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଟେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इस बड़े सेवा के लिए आप अपने आप को तैयार करो। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। इसीलिए मैंने वो वचन पढ़वाया ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଦକୁ ମୁଁ ପଢାଇଲି कि उस महान परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन करो ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର ବା ନମ୍ର କର। और वो उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। ଆଉ ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। बाइबल से कुछ उदाहरणों को देकर समाप्त करूंगा। ବାଇବଲରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। पढ़ने की जरूरत नहीं है। ପଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। आप सभी यूसुफ का कहानी जानते हैं। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୋସେଫର କାହାଣୀ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। पहला ही किताब उत्पत्ति में उसका स्टोरी लिखा है। ଆଉ ସେ ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଅଛି। हम देखते हैं उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। उसके घर वालों ने नफरत किया ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ और उसको मार पीट करके सूखे कुएं में डाल दिया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ସେ କୂଅରେ ତ ପକେଇଥିଲେ, वहां पर भी मरा नहीं। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିଲା ନାହିଁ। और जब पता चला मरा नहीं, उसको लेकर बेच दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ମରି ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କଲେ। मेरे प्रियो, जिन्होंने खरीदा था उन्होंने किसी को बेच दिया। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଣିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କଲେ। लेकिन इन सभी परेशानी के बीच में भी यूसुफ हम देखते हैं नम्र बना रहा। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଥିଲେ। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दीन बनाए रहा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଥିଲେ। और जब हम उत्पत्ति 40वें अध्याय में आते हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବରେ ଆସୁଅଛୁ, वहां पर ऐसा लिखा है कि फारो ने यूसुफ को पूरे मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। ମିଶ୍ରର ରାଜା ଫାରୋ ମିଶ୍ର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହାନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब आपको मालूम है आगे का कहानी क्या है। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କଣ ସବୁ ହେଇଅଛି। इन माता पिता भाई बहन के जगह पर बहुत बड़ा अकाल। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ପିତାମାତା ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। और वो सभी
मिस्र में गए। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଗଲେ। और देखिए इसी यूसुफ के सामने जाकर दंडवत कर रहे हैं। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରୁଛନ୍ତି। हम भूखे हैं, हमारे उधर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋକିଲା ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଗାଁରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। समझने का प्रयास कीजिए। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। जिन भाइयों ने मारा पीटा वही अब देखो आकर दंडवत करके भीख मांग रहे हैं। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यूसुफ ने कहा कोई बात नहीं, मत डरो। ଆଉ ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। तुमने मेरे हानि के लिए किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसको लाभ के लिए बदल दिया। ତୁମେ ମାନେ ମୋର କ୍ଷତ ନିମନ୍ତେ କଲ, ମୋର ମାନେ ଖରାପ ନିମନ୍ତେ କଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज आपको कोई सता रहा होगा, ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଅଛନ୍ତି, आपके घर में कोई सता रहा होगा, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦେଉଅଛନ୍ତି, कोई आपको अपमानित कर रहा होगा, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କରୁଅଛନ୍ତି, कोई आपको निंदा कर रहा होगा। କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି, लेकिन आज रात्रि में बताना चाहता କିନ୍ତୁ हूँ, ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, उन्हीं निंदा करने वालों के सामने उठाने वाला हमारा परमेश्वर ଏହି है। ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରିବାର ଅଟନ୍ତି। आपके विरुद्ध में खड़े हुए लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାର ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। जिन्होंने आपका खिल्ली उड़ाया, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଅଛନ୍ତି, जिन्होंने अट्टहास किया, हंसी मजाक उड़ाया, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଅଛନ୍ତି, प्रभु उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତରେ ରଖିଲେ। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। वो हमको भी उचित समय पर ऊंचा ସେ उठाएगा। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ऐसा ही हम देखते हैं एस्तेर की किताब में। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ। वहां पर एक व्यक्ति था मोर्देकाई। ଆଉ ସେଠାରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। वो तो राजघराने के बाहर ठाठ का वस्त्र पहन के बैठता था। ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର ବାହାରେ ଯୋଉ ଗେଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଫାଟକ ଥିଲା, ସେ ଫାଟକ ପାଖରେ ସେ ବସିଥିଲେ। हामान को एक दिन गुस्सा आया, ये सभी को दंडवत करता है लेकिन मोर्देकाई मुझे नहीं दंडवत करता है। ହାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ମୋତେ କରୁନାହିଁ। लेकिन मोर्देकाई को मालूम था किसके सामने झुकना है और किसके सामने ना। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ଜଣା ଥିଲା କି କାହା ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ, କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था मोर्देकाई। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ଯିଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हामान ने योजना बनाई, एक धोखा तैयार किया। ଆଉ ସେ ହାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲା। उसने राजा को पटाया ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ କଲା ବା ପ୍ରଲୋଭନ କଲା। और पूरे यहूदियों को मार डालने का साजिश रचा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା। और उसने फलाना तारीख का घोषणा कर दिया ଆଉ ସେ ଏକ ତାରିଖକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା कि उस रात को या उस दिन को सारे यहूदियों को मार डालेंगे। ଆଉ ସେହି दिନ ହିଁ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। और एस्तेर रानी वो भी यहूदी थी, वो भी मर जाती, और मोर्देकाई यहूदी था, वो भी मर जाता। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। लेकिन मेरे प्रियो मोर्देकाई, एस्तेर और सहेलियां सब मिलकर उपवास करके प्रार्थना करने लगे। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। बाइबल में आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं दिया। ଆଉ ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ରାଜାଙ୍କର ନିନ୍ଦକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ। राजा ने पूछा, ये क्यों, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा? ରାଜା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ନିଦ ହଉନାହିଁ? उसने कहा, रजिस्टर खोलो, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାଢ। देखो उसमें किसने हमारे लिए अच्छा काम किया। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିଛି, और किसको हमने सम्मानित नहीं किया। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କରିନାହୁଁ। तो उसने देखकर बताया,
कि एक बार मोर्देकाई ने आपका जान बचाया था लेकिन उसको सम्मानित नहीं किया। ଆଉ ସେଠାରେ ସେଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ମର୍ଦ୍ଦକୀ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲା ରକ୍ଷା କଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। मंत्री को बुलाओ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ। तो तुरंत हामान को मंत्री को बुलाया ଆଉ ହାମାନକୁ ତାକୁ ଡକାଗଲା। और हामान सोचा कि राजा मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है। ଆଉ ହାମାନ ଭାବିଲା ଏ ରାଜା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକ। और राजा ने पूछा हामान जिस व्यक्ति ने राजा को बचाया है उसके लिए क्या करना चाहिए। ଆଉ ହାମାନକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଏ ହାମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? राजा जिससे खुश है उसको कैसे सम्मानित किया जाना ରାଜା चाहिए। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ? हामान ने सोचा राजा मेरे से बहुत खुश है। ଆଉ ହାମାନ ଭାବିଲା କି ରାଜା ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ବୋଧେ ମତେ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। तो उसने कहा राजा जिससे खुश है उसे घोड़े में बिठाओ। ଆଉ ସେ ହାମାନ କହିଲା ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସାଅ। उसको राजा का परिधान पहनाओ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। राजा का अंगूठी पहनाओ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। और उसको पूरे शहर में घुमाओ। ଆଉ ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯାଉ। और ऐसा घोषणा किया ଆଉ जाए ତାହାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ପଛେ ପଛେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। राजा जिससे खुश है उसको इस रीति से सम्मानित किया जाएगा। ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। राजा ने कहा ओके ରାଜା କହିଲେ ଡନ୍ ଓକେ ऐसा ही करो। ଏମିତି ହିଁ କର। और हामान से बोला ଆଉ ହାମାନକୁ କହିଲେ जा जो तूने बोला है उससे थोड़ा भी कम नहीं करना। ଆଉ ରାଜା କହିଲେ ହାମାନକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମେ କହିଲ ସେଇ ବିଷୟର ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦକୁ ତମେ ଉଣା କରିବ ନାହିଁ। वैसा का वैसा जाकर मोर्देकाई के लिए कर। ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ସେମିତି ହିଁ ଯାଇକି ତମେ ମର୍ଦ୍ଦକୀ ପ୍ରତି କର। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उचित समय पर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। ଉଚିତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। आपको बस नम्र होना है। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। आपको दीन होना है। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। वो शत्रु को गिराएगा। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଚରେ ପକେଇବେ। उसको कैसा भी चाल बनाने दो। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବି କୁମନ୍ତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। कैसा भी योजना बनाने दो। କି ପ୍ରକାର ବି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। कैसा भी साजिश बनाने दो। ଏ ପ୍ରକାର ବି ସେ ଫାନ୍ଦ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁ। वो सफल नहीं होंगे। ଏ ଶତ୍ରୁମାନେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। जिसके साथ परमेश्वर है परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ଜୟ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। कितने लोग को समझ में आ रहा है? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଅଛି? आमेन आमेन। तो और उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ऐसा ही उदाहरण हम दानियल के बारे में देखते हैं। ଠିକ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରୁ ଦେଖୁଅଛୁ। दानियल ने कहा कि मैं इस भोजन को खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। ଦାନିଏଲ କହିଲା ଏହି ରାଜକୀୟ ଭୋଜନକୁ ମୁଁ ଖାଇକିରି ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। और आप परमेश्वर का जब सही समय आया ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଠିକ ସମୟ ଆସିଲା राजा का स्वप्न कोई बता नहीं पाया। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। उसका अनुवाद कोई कर नहीं पाया। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर से जो करीब था उस दानियल ने राजा का स्वप्न भी बताया उसका अर्थ भी बताया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲଙ୍କର ନିକଟ ନୁହଁ ଥିଲେ ସେହି ଦାନିଏଲ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ। और आपको मालूम है क्या हुआ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? उचित समय पर ଉଚିତ ସମୟରେ दानियल को राजा ने पूरे बाबुलोन के ऊपर अधिकारी ठहराया। ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ଦାନିଏଲକୁ ରାଜା ବାବିଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। हमको ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବା ହଉଛି ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। आप कहेंगे ये सभी उदाहरण पुराने नियम से है। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ତ କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଟେ। नए नियम से आखिरी उदाहरण देता हूँ। ନୂତନ ନିୟମର ଗୋଟେ କେବଳ ମୁଁ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେଇ नए नियम में सबसे अच्छा उदाहरण हमारा यीशु मसीह है। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। स्वर्ग की महिमा छोड़कर ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି उस महान परमेश्वर शून्य बनकर इस धरती पर ସେ आया। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ। बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को मृत्यु तक दीन नम्र कर दिया। ଆଉ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଆଉ ଦୀନ ବନେଇଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सभी ने सोचा कलवरी क्रूस पर उसका सब कुछ समाप्त हो गया। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। लेकिन नहीं, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଠିଗଲେ। क्योंकि वो इतना दीन हुआ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ନମ୍ର କଲେ, ଦୀନ କଲେ। उस पिता परमेश्वर ने ସେହି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର दुनिया का सबसे बड़ा महिमा यीशु को दिया। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବ ଓ ମହିମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଲେ। पुनरुत्थान की शक्ति उसे दिया ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ। और यीशु मरे हुओं में से जी उठा। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज रात्रि में बताना चाहता ଆଜି हूँ, ରାତ୍ରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, जो अपने आप को दीन करेगा, ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ, जो अपने आप को सबसे नम्र करेगा, ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର କରିବ, उसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚରେ ଉଠାଇବେ। आपकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପରମେଶ୍ୱର ପୂରଣ କରିବେ। आपके लोगों के सामने वो ऊंचा उठाएगा। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। जहां आपको अपमानित किया वहां पर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ସେହି ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। कितने लोग विश्वास करते हैं? ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, वो है इस वचन का अर्थ ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ कि उसके बलवंत भुजाओं के अधीन दीन और नम्र बनकर रहो। ତାହାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଆଉ ଦୀନ କରି ରଖ। और वो उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। अपना सारा चिंता उसके ऊपर डाल दो क्योंकि वो संभालेगा। ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଦିଅ, ତାକି ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। आमेन। ଆମେନ୍। आप तैयार हैं? କଣ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି କି? हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक छोटे बच्चे का कहानी मुझे याद आ रहा है। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୁଆର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡୁଅଛି। छोटी सी बेटी अपने पिता के साथ दुकान में कुछ खरीदने गई। ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଛୋଟ ଝିଅ ଶିଶୁ ସେ ଦୋକାନରେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। पापा ने जो खरीदना था दुकान से खरीद लिया। ଆଉ ସେ ବାପା ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଣିବାର ଥିଲା ସେ କିଣିଲା। उसके बाद पापा मुड़ गए, ତାପରେ ତାର ପିତା ସେ ଭୁଲି ଗଲେ, लेकिन बेटी मुड़ी नहीं, କିନ୍ତୁ ତାର ଝିଅ ସେ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। क्योंकि उसको उस दुकान के सामने जो चॉकलेट का डिब्बा रखा है वो देखकर उसको लालच आ गया। ଆଉ କାରଣ ସେଇ ଝିଅର ଯୋଉ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। अब ये देखकर जो पापा मुड़ गए थे उन्होंने कहा बेटी क्या चाहिए? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ବାପା ଯିଏ ବୁଲିଥିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ତତେ କଣ ଦରକାର? उसने कहा कुछ नहीं, वो डर के कुछ बोल ही दे। ଆଉ ସେ ଝିଅ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ଡରିକିରି ସେ କହିଲା ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। पिता ने कहा अगर चॉकलेट चाहिए तो बेटी ले ले। ଆଉ ଯଦି ଚକୋଲେଟ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇଦେ ବୋଲି ତା ପିତା କହିଲେ। बेटी ने नहीं लिया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ନେଲା ନାହିଁ। अब पिता ने कहा बेटी तुझे जो पसंद चॉकलेट है ले ले, मैं पैसा देता हूँ। ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପା କହିଲେ ଝିଅ ତତେ ଯୋଉ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ପସନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ନେ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। उसने नहीं लिया। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝିଅ ନେଲା ନାହିଁ। ये सब देख रहे दुकानदार ने कहा बेटी पापा बोल रहे ले लो ले लो। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା ଯଦି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇଯାଅ। उसने नहीं लिया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ନେଲା ନାହିଁ। अब दुकानदार ने अपना हाथ डाला ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନୀ କଣ କଲା, ତାର ହାତକୁ ସେଇ ଚକୋଲେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା और इस बेटी को कुछ चॉकलेट लेके दिया। ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକ ଦେଲା।
उसने दोनों हाथ पसार के चॉकलेट लिया ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖୋଲିକିରି ସେଇ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକୁ ନେଇଗଲା और वो अपने पापा के साथ चल दिए। ଆଉ ସେ ତାର ବାପା ସହିତ ମିଶିକି ପଳେଇ ଗଲେ। जैसे ही घर पहुंचने वाले थे, ଯେମିତି ସେମାନେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା पापा ने कहा, मैंने कहा उठाओ, ले लो, तूने नहीं लिया। ପିତା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନିଅ ତମେ ନେଲ ନାହିଁ। उस दुकानदार ने कहा, ले लो, आपने चॉकलेट नहीं लिया। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା ନିଅ ତମେ ନେଲ ନାହିଁ। लेकिन जब उसने अपना हाथ से लेकर दिया, आपने क्यों उठाया? ତ ସେ କହିଲେ ବାପା ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଲେ ତମେ କାହିଁକି ନେଲ? उस छोटी बेटी ने ऐसा उत्तर दिया, ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେଇ ଝିଅ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ पापा मेरा हाथ कितना छोटा है, ବାପା ମୋର ହାତ କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। मैं अगर लूंगी तो मुझे 2 या 3 चॉकलेट ही मिलेगा। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାଢିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଚକୋଲେଟ ମିଳିବ। लेकिन दुकानदार का हाथ कितना बड़ा है, वो मुझे देता है तो मुझे बहुत सारा मिलता है। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୋକାନୀର ହାତ କେତେ ବଡ, ଯଦି ସେ ଦେବ ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ନା କେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ। इसका आत्मिक अर्थ को समझने का प्रयास ଏହାର करें। ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। हम अपने कोशिश से, अपने बुद्धि से, अपने ताकत से थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳରେ ଆମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। कुछ अपने शक्ति भी, अपने योजना से कुछ हम कमा सकते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କିଛି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। लेकिन उस परमेश्वर के बलवंत भुजाओं के नीचे अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे, वो कितना अधिक देगा। आमेन। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତଳେ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ନା କେତେ ସେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। हम अपने हाथों से उसको उठा भी नहीं पाएंगे। ଆମେ ନିଜର ହସ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। उसका आशीष इतना होगा कि वो उमड़ने लगेगा। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ହେବ କି ତାହା ସେଇଟା ଫୁଟିବା ବଳିକା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। आज रात्रि में पूछना चाहता हूँ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, आप में से कितने लोग खुद से कुछ लेना चाहते हैं, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? या कितने जन उस परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं? ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर से पाना है तो बस अपने आप को दीन करो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ एकमात्र ଉପାୟ ସେଇଟା ଅଛି ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ନମ୍ର କରୁ। अपने आप को पूरी तरह नम्र कर दो ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନମ୍ର କରିଦେବା। और वो आपको ऊंचा उठाएगा। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବେ। जैसे उसने यूसुफ को उठाया, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, जैसे उसने मोर्देकाई को ଆଉ उठाया, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ, जैसे उसने दानियल को उठाया, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ, जैसे उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को जी उठाया, जे प्रकार से ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉନ୍ନତ କଲେ, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी ऊंचा उठाएगा। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବେ। कितने लोग तैयार हैं? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? इस महान यीशु के हाथों में समर्पित करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ଏହି ମହାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ।